Okay, so again we are going to see three important questions. Okay, करते हैं जितनी मेहनत हो सकते हैं करते हैं एंड देन वी विल सी एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट हाँ, बिगिनिंग से थोड़ा थोड़ा करते रहिए. इट विल रियली इनहांस योर प्रीलिम्स नॉलेज. एकदम करना है. यहाँ पे नहीं होगा तो बिल्कुल, इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, ओके, एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड वन थिंग, अगर आप गोल्ड टाइट प्लेटफॉर्म पे आ गए सो यहाँ पे आप क्लियर करके ही जाओगे 100%. ओके, देयर इज नो इफ एंड बट देन you have to do all the things, all the like whatever I suggest. जो भी I am giving you the solutions, I am giving you the assignments, आप कीजिए उसको and then try to focus. ठीक है. Now the very first question regarding the common security and defense policy. Now why this policy I asked you recently is a security framework. Okay, why I asked you this framework, because recently if you see, with a view to further strengthen security and the defense cooperation, the European Union organized in Europe a 3-day study visit for the senior Indian officials from the, now it was related to somewhere India. Okay, the senior Indian officials from MEA and Defense, Ministry of Defense, briefed on the EU common security and defense policy. So basically this policy is an integral part of the EU's common foreign security policy. तो आप देख लो, ये पॉलिसी जो है it is related to European Union. So there is no doubt. Okay, the answer is C here. So this was a basic question. ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 100% आ रहे हैं. आप देखो लास्ट ईयर नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, उसके पहले ग्रीन पैक्ट कोई आया था क्वेश्चन 2023 में रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन. सो आंसर विल नॉट बी ऑलवेज यूरोपियन यूनियन. कोइंसिडेंटली इट इज ऑलवेज यूरोपियन यूनियन, but it may come sometimes outside European Union also. But what exactly we have to think about is that UPSC is trying to focus on some other organization as well. Okay, और जो लास्ट 2 years से आए थे उसमें इंडिया का कोई रोल भी नहीं था. दिस तो चलो इंडिया में कुछ तो रोल दिख रहा है, पर लास्ट 2 years से जो भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देयर इज नो रोल ऑफ इंडिया. सो बेसिकली इट्स IR क्वेश्चंस. कुछ बाहर की कंट्री में क्या रिलेटेड टू एनवायरमेंट. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, लास्ट ईयर जो भी 2 क्वेश्चंस आए, इट्स ऑल रिलेटेड टू एनवायरमेंट. ओके, तो आई फील एनवायरमेंट कहीं से भी पिक करो एंड जस्ट ट्राई टू लर्न, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. नाउ द वेरी सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत मजा आएगा if you don't know this concept. Now very first question talks about the, now I will tell you one thing, there are two kind of central law and the state law. Now it is related to the concurrent list. Okay, it's related to the concurrent. Now it says the state legislature cannot frame law on any subject on the concurrent list if parliament law is already existing on this subject. Okay, so if parliament law is already existing, concurrent में दोनों बना सकते हैं. It's both can make law on the concurrent. So if parliament has already made the law, state cannot make law. So as per the statement, state can only make law that on that topic in which the parliament has also not made law. ठीक है, ये कह सकते हैं. और दूसरा नैरेटिव क्या निकाल सकते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ आफ्टर द स्टेट लॉ, बट स्टेट लॉ कैन नॉट मेक लॉ आफ्टर द पार्लियामेंट लॉ. तो आपके डिफरेंट नैरेटिव्स एज पर द स्टेटमेंट्स, इट इज देयर. नाउ विल सी द सॉल्यूशन. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू अमेंड एंड रिपील एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इन द कंकरेंट. सो कंकरेंट लिस्ट में स्टेट कोई भी लॉ बनाया तो पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है. देयर आर 2 words, लिसन वेरी केयरफुली, सी हियर, देयर आर 2 important words. द कॉन्स्टिट्यूशन and has empowered the parliament. So constitution has empowered the parliament or not, this is very very important, because sometimes the constitution empowered the president, executive, the ruling government, but you see here constitution is empowered the parliament. So these 2 statements we will see. So to solve these 2 statements, where we'll go to the article 245, sorry. Okay, 254 only. So we'll go to article 254. Now if you see here what it is written, आप line by line मेरे साथ चलो, then you will realize the importance of polity and how difficult the polity is. Okay, now what it says, when a law made by the legislature of the state with respect to one or the matters enumerated in the concurrent list contains any provision
रिपग्नेंट का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. So as per the article 254 clause 2, if state legislature make any law inconsistent with any existing law of the parliament, मतलब state is making law after the parliament. Okay, so the law so made the law so made by the legislature of such state shall, if it is been reserved for the consideration of the president and has received his assent, prevail in that state. So I am not worried about, I am not thinking about what will happen, prevail or not. The first statement says the state cannot frame law. This is incorrect. It can frame law, and but that law can be reserved for the president, and then after the president, ठीक है, after the president, if you see here, if they receive the assent, it will prevail in the state. Now, if you see the second statement, what does it say? It says that Constitution has power to amend the repeal the law. Now, if you see article again, the next. Now the state has passed the, and it has been consideration of president, received the assent and prevailed in the state. Now the second statement says, nothing in this clause shall prevent the parliament, not president, from enacting any time any law with respect to the same matter, including a law adding to the amending, repealing the law made by the. So whatever the law made by the state, the constitution has empowered the parliament can make changes. Okay, so second statement जो हमारा है, that is also correct. Okay, the first statement is incorrect, second statement is correct, so answer is B. Difficult नहीं है, difficult है. See, अगर मैं पहला, if you ask, I ask you one more statement. Okay, suppose I ask you one more statement that parliament cannot pass a law on the subject which already has been framed by the state. Okay, तो इसका भी solution, if आप देखो यहाँ पर law made by the parliament whether passed before or after the law made by the state, तो parliament का law will be prevailing. Okay, so it doesn't matter the parliament frame law before the state or after the state. The law of the parliament is supreme, it will prevail 100% in the concurrent list. समझ में आया? So थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, होपफुली यू लर्न टू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई फील लाइक दिस इज, ये न्यूज में भी था. ओके, न्यूज में कहा था दैट आई हैव गिवन टू माय अभ्यास स्टूडेंट, बट इट वाज इन न्यूज. Okay, now if you see the agreement on the government procurement GPA, okay, now if you see this is an agreement within the framework of the WTO. Now this is important. ये जो agreement on the government procurement है, it is framework under the Food and Agriculture Organization में देता अगर, तो आप definitely confuse होते. So to make it easy, and I know कि आप WTO hit करोगे 100%, तो मैंने WTO किया. Sometimes we make it easy for you, बट लर्निंग ज्यादा मुझे चाहिए होता है. तो आप देखो, एग्रीमेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द WTO. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, WTO का ये एग्रीमेंट है. दूसरा है इट इज बाइंडिंग, एंड तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज सिग्नेटरी. ठीक है, अब तीनों का सोल्यूशन देख लेते हैं. जीपीए का देखो आप, जीपीए में क्या किया कुछ, इफ यू सी द WTO के अंदर से ये मैंने लिखा हुआ है. इफ यू सी हियर देयर आर सम एग्रीमेंट्स, ओके, वेयर फॉर मोस्ट पार्ट ऑल WTO members subscribe to WTO agreements. After the Uruguay round, however, there remained the 4 agreements. Okay, Uruguay के बाद, एग्रीमेंट के बाद, राउंड के पास यू विल सी देयर आर 4 एग्रीमेंट्स ओरिजिनली नेगोशिएटेड इन द टोक्यो राउंड विच हैड नैरो गैप ऑफ सिग्नेटरीज एंड ऑल्सो नोन एड plurilateral agreement. Okay, so there are 4 agreements. Now this agreement, if you see here, is a plurilateral agreement within the frame of WTO, meaning that not all WTO members are parties to the agreement.
Okay, so there are some agreement which are called plurilateral agreement after the Uruguay round. Okay, Uruguay round. Now this is something like थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसको प्रोनाउंस करने में. It's fine. So now important for it is not for the all WTO countries. ये आपको याद रखना है. ठीक है. So second statement जो हमारा है binding on all the members of the WTO, ये गलत हो जाएगा. Okay. Now if you see the third statement, agreement on the government procurement has 22 parties only, and if you see India is observer, it's not a party to the agreement, so India is not a signatory. समझ में आया? So if you see this statement is a signatory, it's incorrect. Is binding is incorrect. Is agreement or WTO, it's correct. तो answer is A only. One only. ठीक है? So this is what you learned today. Important रहते हैं ये questions आपको. I guarantee you won't get in the daily quiz or somewhere, क्योंकि मुश्किल एफर्ट लगता है इनको बनाने में. दिस इज नॉट इजी टू फ्रेम सच क्वेश्चंस. ओके, इट्स डीप इनसाइड द न्यूज समथिंग, देन यू टेक आउट द न्यूज, देन यू फ्रेम द क्वेश्चन, देन यू गो टू ओरिजिनल वेबसाइट. सो इट्स अ हार्ड वर्क. जस्ट आई वांट यू पीपल टू डू द सेम. ओके, आप भी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए प्रीलिम्स को. आई फील प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर अगर प्रीलिम्स का टिकट नहीं है आपके पास तो ना ही मेंस काम आएगा ना ही इंटरव्यू काम. ठीक है, चलिए कल फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. फॉर टुडे इट्स ओवर. ओके, चलो.